Okay students, now after we have done page number 8, let's come over to page number 9. Now on this page, what do you see on the top? It's written A, B words, right? So what do you understand from this topic? Today we are going to learn those words in which you will find A and B. Now as you can see on this page, all the words have been given to you in which A, B is there. Right? So today we will learn new words which have A, B in them, and because we have already learned the phonic sounds, so it will be very easy for us to learn these new words. And what is the procedure to learn a new thing or to understand? Yes, like always, we will first identify the picture and then we can see the word written in front of it. So we will be able to understand what that thing is and we will be able to learn that also. So now let's quickly start with the A, B words. Over here, first of all, you can see it's written C, K, A, B, B. So what is the sound? K, A, B. The word is cab. Cab, cab. And this is the cab you see, the yellow taxi. You call taxi cab also, right? So this is the cab and this is the spelling for cab, and this is how the word cab is formed. We have added A, B to consonant C and the entire word is cab, cab, right? Now let's come up to the next word. The next word is D, D, A, B, B, D, A, B, dab. Now what do you see in this picture? You see that it's maybe a lady's hand and she is holding a tissue in her hand. Now what she is doing? She is dabbing. Dabbing means किसी चीज़ को धीरे धीरे पैट कर करके, टच कर करके सुखाना या पोंछना, राइट? जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे कुछ गिर गया हो या फिर कोई चीज़ आपको छुड़ाना हो जिसका निशान आपके हाथ पे आ गया है, तो हाथ पे या कहीं पे भी, तो आप जब उसको धीरे धीरे ऐसे टच कर करके जब आप उसको छुड़ाते हो उसे डैबिंग कहते हैं. एंड द वर्ड इज dab, D-A-B, dab, right? Now let's come up to the next word. L, L, A, B, B, lab, L-A-B, lab. What do you see over here? A lab. Now let me tell you what a lab is because you're too small to understand what a lab is. जो हमारे घर में हम मेडिसिन्स मंगवाते हैं, ख़रीदते हैं, कभी हमें ज़रूरत होती है तो गॉड फॉरबिड, वो मेडिसिन्स एक प्लेस होती है, एक जगह होती है जहाँ पे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ये सब मिलके उसे प्रिपेयर करते हैं कि इसमें क्या केमिकल होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे वो चीज़, बीमारी या वो दिक्कत ठीक हो जाए. तो लैबोरेटरी होती है वो. सो द वर्ड फॉर दिस प्लेस, you call this place a lab, L-A-B, lab. You see a lady over here, she is testing something and there are a lot of chemicals, medicines over here. So this place is called a lab. Okay, now let's come up to the next one. N, A, B, B, nab. What do you see over here? A policeman, a cop, is arresting a thief, right? What is he doing? He has this thing in his hand through which he will lock him up. Nab. Nab का दूसरा मतलब caught भी होता है, पकड़ना. पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ लिया. वो उसको हैंडकफ्स में, ये जो हाथ में है, जिस चीज़ से उसके हाथ बांधे जा रहे हैं उसे हैंडकफ कहते हैं. आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, हथकड़ी कहते हैं जिसे हिंदी में. तो पुलिसमैन हथकड़ी से थीफ का हैंड्स बंद कर रहा है, उसे अरेस्ट कर रहा है. सो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज नैबिंग. नैब, दिस इज कॉल्ड नैब, पकड़ लिया उसको. ठीक,
So the word is N-A-B, nab. Now, after we have learned these three words which are given in a book, after I finish up explaining you page number 9, you will again get to see a video in which you will see how these words have joined these alphabets and have formed a 3-letter word which has A, B in it. Okay, so you will be able to understand this better. Before that, let me come up to these the rhyming words also, which is given on the bottom of this page. Rhyming words. Now what are rhyming words? Rhyming words means those words which sound the same as the original word. मतलब जैसे हमने बोला, कोई भी वर्ड बोला, जैसे हमने बोला nab, N-A-B, nab. अब यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स क्या दिया गया है? फैब. तो साउंड सेम आई. लास्ट के दोनों वर्ड्स की साउंड बिल्कुल सेम है. एब, एब. तो इसे कहते हैं राइमिंग वर्ड्स. तो आपको इस पेज पे इसी तरीके के और राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें ए बी यूज़ हो रहा है एंड वो राइमिंग वर्ड्स भी हैं. राइट? सो लेट्स क्विकली रिवाइज दीज राइमिंग वर्ड्स. F-A-B, F-A-B, फैब. फैब मीन्स बहुत बढ़िया. G-A-B, गैब. J-A-B, jab. T-A-B, tab. Right? So all these are the words that we have learnt on page number 9 which have A, B in them. Right? So we have learned all these words which have A, B in them. Now let's move over to the next page, which is page number 10. Now on page number 10 there is a practice exercise given to you. जो भी हमने अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज है. इस पेज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उस वीडियो को देखेंगे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है, जिसमें आप ए बी वर्ड्स को और समझ पाओगे. उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश करना जिससे कि आपको समझ में आए. ओके, नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिस एक्सरसाइज. रीड द वर्ड्स एंड मैच देम विद द पिक्चर्स. व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में आपको पिक्चर्स दी गई हैं. एंड ये वही वर्ड्स और पिक्चर्स हैं जो अभी अभी हमने पढ़े थे अपनी बुक पे. राइट? So it shouldn't be difficult for you to do it on your own. Now, let's take up the first one. D-A-B, dab. One more thing students, आप देख रहे होगे मैं हर वर्ड को उस लेटर की साउंड के साथ पढ़ रही हूँ, इसलिए जिससे कि आपको उस वर्ड को स्पेल करना आ जाए कि कैसे करते हैं. अगर मैं सीधे डैब बोल दूँगी तो आपको नहीं समझ में आएगा. हमने फोनिक साउंड्स पढ़ी है ना, डी, ड, ए, ए, बी, ब. तो आप सबकी साउंड्स को रिलेट करोगे, आप अपने आप पूरा वर्ड बोलना और लर्न करना सीख जाओगे. डैब. नाउ व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी फॉर डैब? टेल मी. आई जस्ट टोल्ड यू. Look at these pictures. Yes, this one. You can see she's dabbing. Dab. So what we will do? We will match dab with this picture. Like this. Okay, and make an arrow like this, जिससे कि क्लियर रहे आपको कि आपने इसी पिक्चर में मैच किया है, कोई कंफ्यूजन बाद में भी ना रहे. नाउ द नेक्स्ट वर्ड. लैब. लैब. What is lab? I told you where medicines, all the scientists, they experiment the medicines. Laboratory. Where do you see a laboratory? Yes, this one. So we're going to match it here like this. Okay, very good. Now next, nab. Nab. Where do you see somebody nabbing? Where do you see the picture for nab? Yes, this one. So we are going to match nab with this picture and make an arrow. Now the last one, cab. Cab. Now quickly match cab. Very easy. Yes, this one.
So we are going to match it and make an arrow. Okay, done? So in the same way you have to do it in your books. Now let's come up to the last exercise for the day. Color the picture and write its name. What do you think this is? First of all tell me. पहले आप पिक्चर आइडेंटिफाई कीजिए, मुझे बताइए क्या है, उसके बाद हम इसको कलर करेंगे. Yes, this is a cab, right? See, you can relate it from here. Cab or taxi, but the word we have learned over here is cab, right? So we are going to write C-A-B, cab over here, and color it up. So let's quickly write down cab. Got it? In the same way we are going to do it. Now what did we see? What color is the cab? Yellow and black. So I request you to please color it in the same way so that you can identify, relate it again that a cab is yellow in color, because this is mandatory. Cab is always yellow in color, right? So make it yellow and the other things black, as you can see in this picture also. In the same way you are going to do it, and it's going to be great fun doing this activity. So that was all for the day, students. I hope all the pages and all the topics are clear to you. Thank you and have a good day. Take care against COVID-19. Bye-bye. Word family. B, ab. K, cab. B, ab. D, dab. B, ab. G, gab. B, ab. Lab. B, ab. Nab. B, ab. Tab. Let's read one more time. Cab, dab, gab, lab, nab, tab. That's it for today. Bye-bye.